the biggest solar power providers, right? It's part of this. We saw that an entity to do this, right? The system itself. We choose. Our project is cultivating vegetables in school campus during leisure. It includes goals: goal 1, no poverty; goal 3, good health; goal 8, economic growth; goal 12, responsible consumption and production; goal 13, climate actions. एंड द पॉइंट नंबर सेकंड इज जो हमारा गोल है फूड सिक्योरिटी एंड हंगर, ये भी कहीं ना कहीं वहां से हमें ये गोल अचीव होते हैं वहां पे. एंड आल्सो व्हेन इट कम्स टू द सोर्स ऑफ इनकम, तो कहीं ना कहीं रिड्यूस वेस्ट जनरेशन थ्रू प्रिवेंशन, रिडक्शन, रिसाइकलिंग एंड रीयूज. तो हमारा फोकस इस पे है. और हमारे प्रोजेक्ट जैसे कि वी आर इनटू द हैबिट ऑफ गिविंग फैंसी नेम्स टू आवर प्रोजेक्ट्स, सो हम लोगों ने भी कुछ नाम सिलेक्ट किया. एक नाम हमारा है कचरे से खाद की ओर, और उसको अगर कश्मीरी नाम अगर लेना चाहें तो पनीन खान. सो ये नाम हमने प्रोजेक्ट हमने दिया है. एंड दिस इज अ स्कूल, एंड दिस इज अ स्कूल बेस्ड प्रोजेक्ट एक्चुअली. सो फॉर दैट मैटर हम लोगों को उस स्कूल में वी आर गोइंग टू डिग अ पिट. यहाँ पे भी लैंड इज अवेलेबल, तो लैंड target. The theme is developing vegetable garden and harnessing of solar energy in school for fulfilling the requirements of serving nutritious food to students during MDM. The objectives of the project are: the project attempts to develop the concept of sustainable development among the students, reduce the hunger, to reduce the poverty and improve the health of children by providing balanced diet during MDM, by providing organic food items to the children, encouraging the children to work. रहीम. और मैं जल्दी से शुरू करूंगी. हमने गोल लिए हैं 1 2 3 4. आप प्लीज देख लीजिएगा. 11 12 13 14 8 और 17. ठीक है, ये सारी कॉम्पिटेंसीज जो वहाँ लिखी हुई हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, सिस्टम थिंकिंग, एंटीसिपेटरी थिंकिंग और सब कुछ ये कवर करता है. हमने लिया है स्मॉल स्केल ट्राउट फार्मिंग. ट्राउट चूंकि हमारे यहाँ की एक अच्छी मछली मानी जाती है और कम भी होती जा रही है, इसलिए हमने सोचा है कि हमारे यहाँ प्रोजेक्ट चलाया था. सो इट्स द सेम थिंग. मतलब जहाँ पे भी लोकल स्पेसिफिसिटी है सिचुएशन की, वहां पे आप ये प्रोजेक्ट अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. वही इश्यूज है. प्लीज बिल्ड इन कॉम्पिटेंसी. सिर्फ प्रोजेक्ट करना नहीं है, बट बिल्ड इन एक्टिविटी सो दैट कॉम्पिटेंसीज आर एनहांस्ड. and here nothing can compare to their talent. हर किसी से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है while they are interacting. This is first point.